been fighting ways to get away. Hello guys, and once again welcome back to my channel. So it's 11:48 a.m. in the morning and it's about to be afternoon, and I'm going towards Narangi right now because one of my friend Marley boy is waiting there. Today आज का प्लान जो है वो थोड़ा सडन प्लान था. नहीं सोचा कि आज कहीं जाऊंगा, लेकिन सडनली कुछ प्लान्स बन गया और अब हम यहाँ से जा रहे हैं नारंगी साइड. Let's see how the day goes. I hope it goes well. See you guys. So today morning it had a very heavy rainfall, so इसलिए अभी वेदर थोड़ा डल सा है, लेकिन भी गर्मी थोड़ी सी है. So but I guess मेरे लिए तो ये बेस्ट वेदर है राइड करने के लिए. गुवाहाटी पे संडे को तो वैसे शिलोंग साइड जाते हैं और वहाँ का वेदर भी बहुत अच्छा होता है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, इसलिए जैकेट पहन के जाते हैं हम लोग. बट टुडे फॉर मी इट वाज नॉट पॉसिबल टू वेयर द जैकेट, तो मैं बिना जैकेट का आ गया. सो आई एम हियर टू द डाइवर्जन. आई डोंट नो मेरा दोस्त कहाँ पे होगा. सो फाइनली मार्ली बॉय हैज़ कम and he has come with a new friend sitting behind him. At this moment I'm really missing TBC motovlogs. Ab kahan ho? Jaldi wapas aa jao. From here we'll be moving now towards 6 Mile. And I recall the past real vaguely. I remember everything they'd say. Maybe thought that I was crazy, thinking that one day they'd see my name. Love being a loner, always moving closer. Knew exactly what I wanted to have. And this is a new friend with the Marley boy. Marley boy, I guess you all know Marley boy, क्योंकि उसको मेरे साथ राइड में काफ़ी बार देखा होगा, TBC मोटोब्लॉग के साथ भी. He is the owner of the R15 V3 maroon color. So let's go. So from here we are to the 6 Mile. What is very confusing. It's a small place, bigger than ours, but even though smaller than the other cities of India, but it's very confusing. We can reach 6 Mile from either here, either left, right, anywhere, but it comes through one point. I'm getting this road right now. I guess यहाँ से मैं जो हर रोज हैदराबादी करके आता हूँ 6 Mile जाने के लिए, वो रोड पहुँचूँगा, लाइक VIP रोड. आई मीन हाँ, VIP रोड से निकलूँगा. या आई एम करेक्ट. आज मौसम सुबह जस्ट निकलते वक्त ठीक था, अब लगभग 12:30 होते गर्मी शुरू हो गई है. तो वन ऑफ द मेन रीजन्स आज मैंने गार्ड्स और जैकेट कुछ भी नहीं पहना. यहाँ 6 Mile पहुँच गए हैं. सो मेरा लाइक आवर फ्रेंड अरूप, ही इज़ वेटिंग नियर द विवांता. सो यहाँ से अब हमें विवांता की तरफ जाना पड़ेगा, एंड देन फ्रॉम देयर वी विल बी राइडिंग टुगेदर. Finally, my friend is here, somewhere here, and I'm just waiting for him. बहुत टाइम हो गया क्या? श्री चल चलता. ठीक है एकदम. और कोई आ रहा है क्या? और कोई आगे चला गया. From the Vivanta. So he is my friend Arup. देखा. And
I recall the past real vaguely. I remember everything they'd say. Maybe thought that I was crazy, thinking that one day they'd see my name. Love being a loner, always moving closer. Knew exactly what I wanted to have. It's full of off-road and I didn't know this many people come here. Oh, that's a challenging one. क्या ऑफरोडिंग हो गया यार आज तो इस पुल पार करता है जो औरंगाबाद जाने के लिए अंदर से भाली मुंह वाला ना हाँ वही So I'll show you this place nicely. Work in progress, good things go slow. I'm no saint. I fall and you pick me up again. Got your habits, got them too. Just feel like maybe I could lose them with you. Sinking in, and I guess I kinda like that. For the first time, you really got my back. Got your habits, got them too. Just feel like maybe I could lose them with you. Lose them with you. Lose them with you. Just feel like maybe I could lose them with. अभी हम लोग टेंट सेटअप कर रहे हैं यहाँ ये टेंट कहाँ से ले आला डिकेटलन नो मैन अमेज़न अमेज़न कितना का पड़ा 900 900 वाओ मैन लेकिन अच्छा टाइम में डिस्काउंट में हाँ वेरी गुड ये रुपी गिरा लिखो We have set up the tent and you can see the tent right here. अंदर दिखाते हैं माले भाई अरे यो कितना आदमी बैठ सके इधर दो तीन आदमी 3-4 ना 4 आदमी आप इधर बैठ सके अंदर तो सोने के लिए जस्ट 3 आदमी I'm inside the tent. It's a bit hot out here. So let me show you from outside. Heading back towards Guwahati. I mean we are already in Guwahati, but I'm in main city. So this is the problem out here. Here is the main part of the problem.
Basista Temple. So this is in the road